Chaliye, very good morning to all of you. So I was telling you, due to some technical issue, we were not able to connect timely. Anyhow, sometimes it happens. So I was telling you that we have revised the syllabus of the first revision test. हमारे सारे chapters हो गए first revision test के, right? Now I think on Tuesday is your first revision test, right? Tomorrow is Sunday and then Janmashtami holiday. On Tuesday your first revision test. So better instead of revising, starting the continuing with the revision test second, let us see the mixed question from all the chapters, right? Let me take. Express minus 84 over 240 in standard form. This number is to be expressed in standard form. What is the meaning of standard form? That means we have to do the cutting until it is possible, till it is possible. So let us do the solution. I am doing it on 2's table. Minus 42 over 120. Again, the cutting is possible. You can continue with the cutting. So this is 21, 60. Again, the cutting is possible. So you have to do till the cutting is possible. So we are doing it accordingly. So this will be minus 7 by 20. This is the standard form of the rational number. Subtract 5 from reciprocal of 5. Subtract 5 from reciprocal of 5. 5 को 5 के रेसिप्रोकल में से सब्ट्रैक्ट करना है. फ्रॉम के बाद वाली चीज हमेशा पहले आती है. सो व्हाट इज आफ्टर फ्रॉम? रेसिप्रोकल ऑफ 5. दिस इज 1 by 5. Subtract 5 from reciprocal of 5. So you can take the LCM. Minus 24 over 5. Right? So I'm taking the reciprocal of 5. Then subtracting 5 from reciprocal of 5. We are getting the answer like this. Next question. Express minus 5 over minus 9 as a rational number with denominator 45. So we have to express it as a rational number with denominator 45. जिसका denominator हमारे पास 45 हो. तो denominator means नीचे वाली चीज, numerator is upper part of the number. So we want to express it as denominator 45. This is 9. We want to make it 45. So when smaller number to bigger number we go, we do multiplication. Smaller number से bigger number में जाने के लिए हम क्या करते हैं? Multiplication. Now 9 will be multiplied by 5 to become 45. सबसे पहले यहाँ पे माइनस है, तो आपको पता होना चाहिए कि माइनस 9 को 45 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस 5 से, राइट? सो आई एम राइटिंग हियर एज minus 5 by minus 9. Minus 9 is multiplied by minus 5 because I need 45, not minus 45. That means this minus sign is to be omitted. So that's why I multiply with minus 5. So this is minus 5 into minus 5. This becomes 25 minus minus plus. This becomes 45 minus minus plus. Right? Next. Product of minus 15 over 7 with its
reciprocal. Product of -15 by 7 with its reciprocal. -15 by 7 का प्रोडक्ट करना है इसके रेसिप्रोकल के साथ. देखिए जरा, -15 by 7 प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई. रेसिप्रोकल -15 by 7 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 7 by -15. उल्टा कर देंगे इसको, इट विल बी 7 by -15. So you are getting it to be -15 7 7. This is 1. आपको 1 मार्क में MCQ बन के आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक आ सकता है. That what is the product of a number with its reciprocal? एक नंबर का प्रोडक्ट उसके रेसिप्रोकल के साथ क्या होता है? तो आंसर क्या लिख के आओगे? It is 1. Product of a number with its reciprocal is always equal to 1. हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है. Next. What is the multiplicative inverse of -18 by 3 plus 1? Multiplicative inverse of -18 by 3 plus 1. फर्स्ट ऑफ ऑल जिसका भी आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, आप उसको पहले सॉल्व करोगे. जैसे ये -18 by 3 plus 1 है, फर्स्टली वी विल सॉल्व इट. -18 by 3 plus 1, solve it. 3 will be taken as LCM. This is -18 plus 3. So I am firstly solving it. We get it to be -15 over 3. So when we solve it, we get it to be -5. We want to find multiplicative inverse of this. -5 का multiplicative inverse क्या होता है? क्या होगा? Shubh, what will be the multiplicative inverse of -5? Shubh. Yes, ma'am. What will be the multiplicative inverse of -5? Ma'am, minus 1 over -5. 1 over -5 या माइनस को आप ऊपर भी लिख सकते हो, वन ऑफ द सेम थिंग. सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5 is equal to -1 over 5. This is answer. Always remember, मान लो हमारे पास एक नंबर है सपोज 20 over -25 है. पेपर में आपको 4 ऑप्शंस आ गए कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगी. आई एम राइटिंग द 4 ऑप्शंस. Which one will be correct? 20 by -25 का स्टैंडर्ड फॉर्म. Yes, Devang, you tell. Devang. Ma'am, 1 second, ma'am. बोर्ड ना वहां से दिख नहीं रहा था. Standard form of 20 over -25. I am writing 4 options. 4 over -5. गलत. स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस का साइन हमेशा ऊपर लेते हैं, तो 4 over -5 नहीं, -4/5. यही आपने पेपर में गलती करके आनी. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डिड दिस मिस्टेक इन एग्जाम, दैट इन स्टैंडर्ड फॉर्म माइनस साइन इज टू बी टेकन इन द न्यूमरेटर. माइनस साइन को हमने न्यूमरेटर में लेना होता है, ना कि डिनोमिनेटर में. राइट, ये गलती नहीं करके आनी. सो यहाँ पे आपको जान के कंफ्यूज किया जा रहा है. माइनस नीचे डाल दिया, कभी ऊपर डाल दिया, कभी दोनों तरफ डाल दिया. माइनस विल ऑलवेज बी इन द न्यूमरेटर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर. याद रखना ये चीज. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट, what is the sum of -5/9 and 11/18? Sum of
minus 5 by 9 and 11 by 18. Minus 5 by 9 and 11 by 18 का sum. Let us see. Plus 11 by 8. Minus 5 by 9 plus 11 by 18. Sum जब हम find करेंगे तो दोनों के बीच में plus का sign. So what is the method? Take the LCM. 18 will be the LCM. Right? Now LCM को numerator के साथ divide करते हैं और जो आंसर आता है उसको डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई. So when you will do 18 को 9 से डिवाइड करोगे you will get 2. 2 multiplied by minus 5 minus 10. 18 को 18 से डिवाइड किया 1. 1 multiplied by 11 11. This is 1 by 18. Now one concept we did to find the rational number between given rational number. I told you between two rational numbers how many rational number lie? Savya, can you tell me between two rational numbers how many rational numbers will lie? Infinite many. Repeat your answer. Infinite many in the Infinite many rational numbers will lie between two rational number. बिल्कुल ठीक आंसर आपने बताया. Between two rational numbers there lie infinite many rational numbers. So we did this question in the three way. First of all, sorry. Suppose we are having the same denominator and we have to find the rational number between 2 by 3 and 5 by 3. What we did for the same 2 by 3 और 5 by 3 का रैशनल के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमने क्या किया था? फर्स्ट स्टेप कोई बता सकता है फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट? अक्षरा, कैन यू टेल द फर्स्ट स्टेप? हरमीत, यू टेल. हरमीत. Yes, ma'am. मैम फर्स्ट we will 2 by 3 को मैम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से. 2 by 3 will multiply by 10. सिर्फ 10 के साथ या 10 के साथ ऊपर भी और नीचे भी? मैम दोनों तरफ. मैम 2 मल्टीप्लाई by 10 and 3 मल्टीप्लाई. Denominator भी. So we will multiply. Harmeet Singh, next step. मैम 5 over 3 मल्टीप्लाई by 10 मैम both the sides. 5 by 3 multiply numerator and denominator by 10. This is 50 by 30. ये 50 by 30 आ गया. Now Harmeet Singh, can you tell me the 5 rational number between these two? Yes, ma'am. 21 by 30, 22 by 30, 23 by 30, 24 by 30 and 25 by 30. Very good. This is the way to find the rational number between two given rational. And second type we have discussed, when the denominator of the rational number is not the same. For example, the question is like this: 2 by 5, 3 by 7. Can anyone tell me the first step? In the case, Ma'am, and we will Ma'am, make the denominator LCM. same. इनका मैम denominator LCM take. क्या करेंगे? मैम And we LCM will take make the करेंगे. denominator First same. of all, we make the denominator to be the same. सबसे पहले हम denominator same बनाएंगे और denominator same बनाने का method हमने क्या सीखा हुआ है? Taking the Ma'am, LCM. So LCM of 5 and 7 will be 35. So we will make the denominator of 2 by 5 as 35 and 3 by 7 का भी 35. So this is 2 by 5. 5 into 7, 2 into 7, 14 by 35. Then the next number is 3 by 7, 7 into 5, 3 into 5. This is 15 by 35. Now you see, हमें 5 numbers find करने हैं दोनों के बीच में, पर दोनों के बीच में गैप बहुत कम है. अब क्या करेंगे? वही कॉमन स्टेप जो सबके लिए किया जाता है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10. 10. अब 10 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे. इसको भी किया, इसको भी, इसको भी. मैम 140 over 350 and 150 over 3. And 150 over 350. So what will be the rational number between these two? You will write it to be 141 over 350. 141 over 350, 142 over 350, 143 over 350, 144 over 350 and 145 over 350. These are the 5 rational numbers between. Third case हमने किया था
when there is no denominator. Suppose -2 and -2. We want to find the 5 rational numbers between -2 and -1. -2 and -1 के बीच में अगर हमें निकालने हैं तो हम क्या करेंगे? Anyone, can you tell me the first step? Should you tell? जब डिनोमिनेटर नहीं है, then what we will do? Should you tell? Yes, ma'am. What will be the first step? We will put denominator 1 on both -2 and minus. डिनोमिनेटर को 1 ले लेंगे, ठीक कहा, -2/1. तो क्या करेंगे 1 लेने के बाद? शुभ, Ma'am, then we will multiply by 10. बिल्कुल ठीक. Then we will multiply by 10 in the numerator as well as denominator. -20/10. Next number is -1. Again denominator is 1. Multiply by 10 in the numerator as well as -20/10 and -10/20. Now अगर आपको रेशनल नंबर लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप नंबर्स ऐसे लिख लो, सिर्फ ऊपर वाला नंबर लिख लो, सिर्फ न्यूमरेटर लिख लो. अब इनके बीच के नंबर अपने आप ही देख लो. -19/10, -18/10, -17/10, -16/10 and -15/10. These are the rational number between -2 and -1. Three cases we have discussed: when the denominators are the same, when the denominators are not the same, and the third case is when the denominator is not there, we will treat 1 as denominator. जब हमारे पास कोई denominator है ही नहीं तो हम किसको denominator ले लेंगे? 1 को. We'll take 1 as denominator. Right? चलिए. What is the sum of smallest natural number, smallest? Chalo, we'll continue it tomorrow. Bell has home. 2 holidays are there. Prepare yourself well for the first revision test, right?